What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to another gameplay video of Hogwarts Legacy. So लास्ट वाले एपिसोड में हमने यहाँ पे अपने जितने भी असाइनमेंट सबको हमने कंप्लीट कर दिया है. सो आज के इस वाले एपिसोड में हम यहाँ पे जो है क्लासेस अटेंड करने वाले हैं. सो फिलहाल तो अभी रात हो रही है, सो रात के टाइम तो हम एक भी क्लास जो है अटेंड नहीं कर सकते हैं. सो थोड़ा इंतजार हमें जो है क्लासेस के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा. एंड ओके, एक फास्ट ट्रैवल है यहाँ पे. सो देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेस्ट जो है हम कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे. एंड वैसे तो हमारे काफ़ी सारे ये तीनों असाइनमेंट चारों असाइनमेंट आई गेस कंप्लीट कर दिए. ओके, सिर्फ फ्लाइंग वाला कंप्लीट नहीं है एंड प्रोफेसर गार्लिक का जो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है. शार्प का असाइनमेंट जिससे हम सीखेंगे डिफियोंडो एंड उसके साथ यहाँ पे जो डिसेंडो एंड ये वाला भी शायद से हाँ वैंग्रांडियम लेवियोसो अभी हम यहाँ पे नहीं सीख सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें जो यहाँ पे इनको यूज़ करना पड़ेगा वेनमस टेंटाकल, जिसके लिए हमें क्लास को जो है ना अटेंड करना पड़ेगा सबसे पहले तो. सो प्रोफेसर शार्प के असाइनमेंट को यहाँ पे हम इसको ट्रैक कर देता हूँ मैं. एंड वैसे तो मैं डे के टाइम यहाँ पे जाना है बट अभी से हम इनके क्लास पे चले जाते हैं एंड टाइम को जो है वहाँ पे थोड़ा सा हम करेंगे स्किप. वैसे मैप पे तो काफ़ी पास दिखा रहा है, सिर्फ 75 मीटर दिखा रहा है बट हमारे राइट साइड में तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है इस चीज़ की वजह से. एंड आई गेस नहीं ज़्यादा ट्रैवल हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो मैं उनकी क्लास के पास आ चुका हूँ एंड क्या डायरेक्टली मैं भी इनसे आके बात कर सकता हूँ. मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि डायरेक्टली जो है अभी हम बात कर सकते हैं. I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. एंड देखते भाई ये डिफेंडो जो है ये वाला स्पेल किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. ओके, ठीक है. तो यह स्पेल यहाँ पे अनलॉक हो चुका है. सो इस स्पेल को पहले यहाँ पे मैं लगा देता हूँ. डिफेंडो वेयर इट इज. क्या ये वाला है क्या? ये डिपल्सो हो गया एंड ये वाला एक्यो हो गया. एक्यो काफी अच्छा स्पेल है यार. बट रुको, वेयर इज दैट स्पेल? क्या ये है क्या? डिसआर्म वॉन्ड्स एंड वेपन्स फ्रॉम मोस्ट एनिमीज. ठीक है, ये नहीं है आई गेस. एंड ये रहा यहाँ पे डिफेंडो. ओके, तो डिफेंडो सिंपल जो है स्लैशेस यहाँ पे देता है. I would encourage you once again to practice here in the classroom. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. एंड काफ़ी अच्छा स्पेल है. एंड इसके अलावा एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे जो हमारा ना सेकंड वाला, अगर आप देखोगे, रुको आई गेस मैं इसको यहाँ से एक्सेस चेंज कर सकता हूँ ना. यहाँ पे देखोगे तो मेरा एक और अनलॉक कर रखा है मैंने बट इसको मैं फिलहाल अभी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ. तो अगर आप में से किसी को मालूम हो ना किस तरीके से मैं इसको जो है चेंज कर सकता हूँ सो जरूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में. यार यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है इस चीज़ को लेके क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको कर दिया था बट इस बार यहाँ पे जो है वेट यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है इस बार. एंड यस, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता था इस स्पेल्स को. सो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैंने इस वाले को एक्सेस कर दिया ना यहाँ पे. एंड इस वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे एक्यो हो गया, रिपल्स एंड मेरे ख्याल से लेवियोसो की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मेरे पे ये 4 टाइप के एक बेसिक पावरफुल अटैक्स अवेलेबल हैं. सो इन सब को जो है मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ. एंड ये हमारा डिसआर्म वाला है. सो डिसआर्म को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी पे. सो इस वाले में हमारा पूरा का पूरा जो सेक्शन रहेगा ना इसमें सारे बेसिक अटैक्स जो होंगे तो पावरफुल अटैक्स बेसिक नहीं उन सबको रखता हूँ. एंड इसके साथ ये वाला जो है ना इसके अंदर टॉप में मैं रखूँगा आई गेस लेवियोसो भी अवेलेबल. आई गेस इनविजिबल वाला नहीं, ये ट्रांसफ्यूजिंग है, वेयर इट इज इनविजिबल लूमोस एंड ये शायद से इनविजिबिलिटी डिसइल्यूजन. सो डिसइल्यूजन को कर दिया टॉप में. लेवियोसो भी फिलहाल लेवियोसो ही अवेलेबल है. लेवियोसो, एक्यो एंड एक और स्पेल है ना तो डिपल्सो का यूज़ करूँ क्या? डिपल्सो हो गया. एंड ये वाला स्पेल कौन सा है? रिपेरो. तो रिपेरो की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है. सो एंड ये वाला जो है इंसेंडियो जिसको हम ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ. सो फ्रीज भी कर सकता हूँ बट यहाँ पे ये वाला ठीक रहेगा. सो मैं इसमें चेंज कैसे कर सकता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है अब. ओके, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है इनको अब चेंज कर सकता हूँ अपने अटैक्स को. ओके, तो स्टार्ट काफ़ी अच्छी हुई इस एपिसोड की. एक कुछ अलग चीज़ यहाँ पे मालूम पड़ी हमें अब. एंड चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेस्ट की तरफ. एंड एक असाइनमेंट तो हमने कंप्लीट कर दिया है
एंड इसके बाद ये वाला जो स्पेल है डिसेंडो, सो इसके लिए मेरे को यहाँ पे जो है डेविटेशन क्लास जो है मॉर्निंग के टाइम लेनी पड़ेगी, बट हाँ इसको ट्रैक करके मैं भी जो है क्लास के बाहर चले जाता हूँ। एंड आई गेस थोड़ा सा दूर जरूर है ये वाली क्लास, मेरे ख्याल से ज़्यादा पास क्लास नहीं है जितनी पास क्लास यहाँ पे पोशन की क्लास थी। और राइट, तो ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है डे टाइम पे हम ऊपर पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पे जो टाइम है जल्दी यहाँ पे जो है सुबह होने भी वाली है। एंड इसमें तो याद नहीं आ रहा है कि मैंने इससे पहले जो है ना डेविएशन की क्लास ली है या फिर नहीं। तो वेट, आई गेस इस जगह पे मैं ऑलरेडी आया हूँ एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने एक क्लास शायद से अटेंड करी है, ये वाली क्लास। मैं श्योर नहीं हूँ कि इस क्लास में मैंने पिछली बार क्या सीखा था, बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाली क्लास जो है मैंने अटेंड जरूर करी है यहाँ पे। सो टाइम को यहाँ पे स्किप करा जाए एंड देख वेयर इज मैप, मैप ये रहा, मैप को खोला जाए एंड टाइम को स्किप करा जाए यहाँ पे। वेट, क्या अभी सुबह नहीं हुई क्या? मेरे को ऐसा लगा था शायद से यहाँ पे जो है टाइम चेंज हो गया हो, बट टाइम चेंज अभी नहीं हुआ है। एंड ठीक है, अब यहाँ पे जो है हो चुका टाइम। एंड ये मेरे ख्याल से हमारा पहला ही एक क्लास होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैं इस रूम में आया हूँ बट क्लास मैंने अटेंड नहीं करी थी। ऑलराइट, सो प्रोफेसर ओनी के पास चलते हैं एंड देखते हैं भाई प्रोफेसर ओनी जो हमें स्पेल है वो कौन से स्पेल किस तरीके से यूज कर सकते हैं। I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? And I see danger, I see power. भाई कौन सा सिरेगा? पावर लेते I हैं। see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your target. चलिए यहाँ पे पहला स्पेल हम सीखेंगे एंड अब तो मैं स्पेल सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि पता लग चुका है मैं किस तरीके से जो है स्पेल्स को जल्दी सीखना है। डिसेंडो स्पेल देखते भाई कैसे वर्क करने वाला है। You have it. Now, why not practice the new spell on the... एंड वेयर इज ओके डिसेंडो स्पेल ये रहा। सो Descender! Excellent. I think you have it. वेट, डिसेंडो ने वर्क क्या करा? मेरे को ये समझ नहीं आया, एक मिनट ना। You must stop preparing. क्या ये डिसेंडो जो है जमीन पे पटक के थोड़ा सा फोर्स दैट मूव्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स एंड देन स्लैम एनिमी। ओके ठीक है, तो ये एक अच्छा यहाँ पे शॉक डैमेज जो है पे प्रोवाइड करता है स्पेल। ओके, तो एक अच्छा स्पेल है ये भी, इसको मैं यहाँ पे लगे रहने दे सकता हूँ। एंड मेरा क्वेस्ट, ये रहा क्वेस्ट, असाइनमेंट और असाइनमेंट यहाँ पे अवेलेबल होते जा रहे हैं।
एंड ये वाला असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं करा, दोनों असाइनमेंट, सो इनका इंतजार करना पड़ेगा हमें। एंड यहाँ पे जो डिपल्सो जो है, ये डिपल्सो मैंने ऑलरेडी सीख रखा है, तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा मेन स्टोरी लाइन जिसको हम बाद में प्रोग्रेस करेंगे। सो एक ही हो गया, एक ये बीस्ट की क्लास में देखो यहाँ पे जो है करना है। सो मैप में देखता हूँ भाई कहाँ है ये क्लास। मेरे को उसके पास यहाँ पे एक ना दिख रहा है, बट आई गेस मैं डायरेक्टली जो है तो थोड़ा सा आई गेस यहाँ पे यस। सो अब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर सकता हूँ बीस्ट क्लास में। वेट, बीस्ट क्लास हमारी क्या बाहर अटेंड होती है क्या? मेरे ख्याल से पहली क्लास होगी बीस्ट क्लास जो मैं यहाँ पे अटेंड करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले कोई भी क्लास मैंने यहाँ पे जो है ना ऐसा जगह पे नहीं ली है। I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howin. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howin's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. क्या You प्रैक्टिस can करना use है मुझे my यहाँ पे? brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant And tap thoughts. this to assign the I beast like to pattern think it brush to enriches your his spell cast. experience. स्पेल सेट में ओके, तो स्पेल सेट में मैं ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है रख सकता हूँ, ये मेरे को अभी मालूम पड़ा है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं वाई पे कर देता हूँ। That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? अब बारी यहाँ पे बीस्ट फूड को देने की, सो इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. एंड वेट, क्या ये ओके, शायद से आई गेस ये एक टाइप के जो है मेरे ख्याल से लायंस और चीता की हाइब्रिड आप इन्हें कह सकते हो, क्योंकि ये कुछ वैसे ही लग रहा है। Whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. तो इनमें से किसी के साथ भी मैं कर सकता हूँ, तो पहले इसको Thank you for your help. उसको Let's देते हैं carry हम on. खाना। Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears also- our time now. Where is our... ये हमें क्यों ढूंढ रही है यहाँ पे?
वेट क्या यहाँ पे और भी हैं क्या? वेट इसके अंदर भी हैं काफी सारे। Beast isn't ready to be interacted. चलो कोई नहीं। Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को आउल का वेट करना पड़ेगा। Come on. रुकिए, वहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे भी कुछ और बीस्ट अवेलेबल है ना, तो कॉपी क्या था, हमें यहाँ पे जो है बातें करनी है। सो पहले चलते हैं, यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well, lead the way. I'd hoped I would. ओके, तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले। मेरे को ऐसा लगा था शायद से हम इसे जो है बाद में करेंगे। I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I चलिए, said, सारे we बीस्ट think इनका alike. इंटरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसके As अलावा a कोई और surprise. बीस्ट मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो वी कैन मूव नाउ एंड चलिए यहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं भाई यहाँ पे कौन सा बीस्ट जो है इसने छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने बीस्ट ही जो है यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है ऊपर। बट वाई डोंट वी फ्लाई यार? ओके, फ्लाई हम नहीं कर सकते अभी बीच में। Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई जो है ना एक हमें बीस्ट देखने को मिल रहा है जिसको इसने जो है चुपचाप यहाँ पे जो है ना कंट्रोल कर Don't रखा है। worry, we're nearly there. It's क्या just बीस्ट कोई ahead. वाटर टाइप बीस्ट है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। Stand back. क्या ये फ्लाइंग हॉर्स? एंड यस, ए ग्रिफिन। Please meet HIGHWING. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her,
but she's a dreadful busybody. So, what did you think of HIGHWING? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and HIGHWING cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep HIGHWING safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. ओके, तो हमने जो पोचर्स को फॉरबिडन फॉरेस्ट में डिफीट करा था ना, तो वही पोचर्स जो है यहाँ पे इन सारे बीस्ट को जो है प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ठीक है भाई, उन पोचर्स को भी अगला मिलेंगे तो उनको भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मार के खत्म कर देंगे। एंड यहाँ पे जो है एक एल्मोरा स्पेल जो हम सीख सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे जो है ग्लैडविन मून के साथ जो हमें बात करनी पड़ेगी। एंड ये वाले स्पेल के लिए तो हम अगले एपिसोड में यहाँ पे जाएंगे, तब इसको मेन स्टोरी लाइन को जो आगे प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल तो इस वाले में हम हॉगवर्ट्स के जितने मिशन हो सकते हैं हम उतने यहाँ पे जो है कंप्लीट कर रहे हैं। वेट, इसमें कोई तरीका होगा ना इसको जूम करने का? एक मिनट ना, ये कोई तरीका तो नहीं है जूम करने का। एंड वेट, नहीं वेट की कोई जरूरत नहीं है मेरे को। इसके अराउंड कुछ तो यहाँ पे होगा कोई सा एक। एंड इसके लिए देखोगे तो पूरा का पूरा ये वाला पाथ मेरे को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक है, इन फ्लैग से ही मैं यहाँ पे जो है कर सकता हूँ। तो ये वाला फ्लैग मेरे को सबसे क्लोजेस्ट लग रहा है, तो इस वाले पे ट्रैवल करता हूँ मैं यहाँ से। एंड देखते हैं भाई यहाँ पे जो है ये स्पेल जो है, ये स्पेल किस तरीके से वर्क करेगा। एंड अभी काफ़ी सारे हमने ना जो आप कह सकते हो कर्स स्पेल सीखे भी नहीं है, जो कि काफ़ी पावरफुल स्पेल्स है इस गेम के अंदर। सो अभी तक हमने वो स्पेल भी सीखे नहीं है, तो जल्दी हम जो है वो स्पेल्स भी यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। एंड वेट यार, मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा ही ना नीचे की साइड आ चुका हूँ। मैं थोड़ा सा ऊपर जो था यहाँ पे फास्ट ट्रैवल कर सकता था, बट वहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है नीचे की साइड जो है फास्ट ट्रैवल कर दिया। एंड मेरे को इस ऊपर वाले पे करना चाहिए था फास्ट ट्रैवल। एंड ये कोई एक नई जगह पे आया हूँ मैं, क्योंकि इस जगह पे पहली बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे तो एक मेरे को ना बॉक्स देखने को मिल रहा है, बट ये चेस्ट जो है, तो वेट मैं इसको आई गेस इसको वेट ओके, तो मेरे को इसके लिए मेरे ख्याल से मेरे को ना एक अलग से जो है मेरे को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने नोटिस करा है यहाँ पे स्पेल्स जो यहाँ पे चालू हो चुके हैं, बट हाँ इनको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ उस तरीके से। सो इसको ऊपर की साइड, एंड यस आई गेस दैट शुड वर्क। एंड लेट्स चेंज इट टू लेवियोसो। वेट, ये तो वर्क नहीं कर रहा है, ये पता नहीं गाइस, ये वाला वर्क नहीं कर रहा है। गैस ये ऐसे वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो इनका हम इंटरेक्ट कर सकते हैं इन सभी के साथ, और कुछ नहीं यहाँ पे। एंड चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर एक फास्ट ट्रैवल का भी है, सो बाद में यहाँ पे ये वाली फ्लेम से हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं जाना हमें, थोड़ा सा गलत जगह पे। एंड काफ़ी ऊपर जगह पे है वाली क्लास। एंड अभी भी हम ना कम्प्लीटली उस क्लास तक पहुँचे नहीं है, अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम और लगेगा उस क्लास तक पहुँचने में।
एंड ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड ये वो एक जाइंट लाइब्रेरी है। एंड मेरे ख्याल से ग्लैडविन मून के साथ मैंने इससे पहले जो है ना अभी तक कोई भी Hello मिशन जो है there, नहीं Mr. कंप्लीट Moon. करा है। Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. तो ये हॉगवर्ट्स का केयर First, टेकर है। please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting मेरे को बिल्कुल याद नहीं कि लास्ट वाला एनकाउंटर मेरा कब इसके साथ हुआ था। आप सभी लोग को याद है कौन से एपिसोड में हमारा एनकाउंटर हुआ था, तो कमेंट में जरूर बताना है जितने लोगों ने प्रीवियस एपिसोड देखे हैं, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि इसके साथ मेरा जो है एनकाउंटर अभी तक हुआ भी है। Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. एंड उस स्टैचू की लाइट के साथ हमें क्या करना है? यहाँ पे पूरा एक कटसीन हमें देखने को मिल गया कि दिन से जो है रात हो चुकी है। रात में लाइट हल्का सा हमें कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment. एंड इसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, डिफ्यूजिंग मून। Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes. एंड यहाँ पे एक पेज था, इस पेज को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ फील्ड गाइड का। This one's एंड आई गेस मैं 17 का हो जाऊंगा। ये 17 लेवल स्टार्ट हो चुका है। A demi-guise. Yes, terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. एंड यार स्टैचूज मैंने ना काफी सारे रूम्स के अंदर और देखे हुए हैं। A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? सो यहाँ पे जो डोर्स है ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्पेल हमें सीखना पड़ेगा जिसकी मदद से हम डोर्स को जो है ना अनलॉक कर सकते हैं, जो कि हमें काफी सारी जगह पे डोर्स जो है लॉक दिखाए जा रहे हैं। Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. सो एक प्रीफेक्ट विंग में, एंड ये रहा वो स्पेल। भाई काफ़ी बड़ा स्पेल है यार ये। एंड देयर वी गो। पीछे से जल्दी, ओ वेट शिट, मैंने इसको थोड़ा सा मिस कर दिया, बट चलो हो जाएगा ये। एंड देयर वी गो, एल्मोरा स्पेल, जिससे मैं यहाँ पे लॉक डोर्स को जो है ओपन कर सकता हूँ। एंड चलिए सबसे पहले यहीं पे मैं इसको कास्ट करूँगा, वेयर इट इज़, एल्मोरा स्पेल। वेट, एल्मोरा स्पेल कहाँ गया? इनमें से कौन सा एल्मोरा स्पेल?
मेरे को कोई सा भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाला इसमें से हो सकता है एल्मोरा स्पेल। ट्रांसल्यूजन, इवेंचुएशन, कॉन्जरिंग हो गया, ये वाला इनविजिबिलिटी, इन तीनों में से तो कोई नहीं है। एंड ये वाला हमारा डिसेंडो, डिपल्सो, एक्यो, ये हमारा लेवियोसो, एंड ये जो है हमारा ग्लेसियस। ओके, तो अप्रोच हमें बस करना है उसके। एंड मूव ग्रीन स्पार्क, मूव रेड स्पार्क, यूज लेफ्ट एंड टू मूव द स्पार्क एंड रोटेट द डायल अंटिल बोथ corresponding gears are activated। क्या मेरे को इस पजल को सॉल्व करना है क्या पूरा? मेरे को कोई आइडिया नहीं पजल को सॉल्व कैसे करना है मुझे। टू एक्टिवेट एंड रिलीज दैम। Use left and right to move the spark and rotate the dial until both corresponding gears are activated। ओके, तो ये वाला एक्टिवेट हो चुका है। एंड तो एक यहाँ पे, एंड देयर वी गो। सो इस तरीके से इन डोर्स को जो है यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ। You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. ओके, तो पर आगे यहाँ पे लोग हैं जो कि प्रीफेक्ट्स यहाँ पे जो अपनी ड्यूटी पे हैं। कि अभी मुझे और ऊपर जाना है। तो यहाँ पे पेज तो मेरे को दिखा था। Poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. अभी मैं काफ़ी ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ रखा हूँ यहाँ पे। बट चलिए यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा स्पेल सीखने को मिल चुका है जिससे हम डोर्स जो है ना ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 1 के जो डोर्स हैं। This must be the prefect's bathroom. ठीक है, मेरे को वापस से दोनों को यहाँ पे जो रोटेट करना पड़ेगा। ये पिछली बार तो काफ़ी इजीली लाइट जल गई थी, बट इस बार तो कुछ तो यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ आई गेस। इसको ऐसे ना करते हुए आई गेस यहाँ पे कुछ और करना है मेरे को, ये चीज़ नहीं करनी है। वो ये डोर्स फिलहाल अभी ओपन नहीं हो रहे मेरे से। फिलहाल इसको मैं बाद में ओपन करूँगा। अभी तो फिलहाल ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है, हो जाएगा अदरवाइज। बस इसको मैं यहाँ पे फील्ड गाइड को जो है कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इस एपिसोड को गाइस यहीं पे रैपअप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को एपिसोड से मजा आया होगा। अगर आप सभी लोगों को जो है एपिसोड्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड साथ में नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए गुड डे गाइस। चलिए यहाँ पे कैच आउट हो गए, काफ़ी अच्छा रहा।